start off, we'll go with Shahir asking you some very basic questions, और फिर मैं और सुमैया बीच में आपसे एक सवाल पूछते रहेंगे. हम चाह रहे हैं कि थोड़ी पॉडकास्ट वाली फील है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम डूइंग दिस एंड दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम डूइंग दिस. तो Okay. ऑब्वियसली बेस्ट तो नहीं होगा, बट वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम अच्छे पॉडकास्टर्स बन सकें, क्योंकि हमने ये All right. कंटिन्यू रखना है. सो just starting off, I'll just ask you the first question. How are you? Firstly, how's it going? How's life? How's studies? All right. So you start हो गया मेरे ख्याल से interview. Yeah, start हो I would चुका suppose. है. All right. So अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ. अभी मैं pursue कर रहा हूँ Masters in Management and specializing in quantitative business, mostly related to data, understanding how data evolves and what information we can draw from data. And at the same time, I'm working with Bosch. और उसके साथ साथ there are a couple of projects, different projects जिन पे मैं engaged हूँ currently. We'll ask you about the projects later Yeah, as well, because we will definitely, sure. also might take data in the future. Maybe not, maybe yes. So it might help us. Uh, Okay. So like हम engineers हैं, आपने भी engineering की. So let's just go a little back and let's start with when it all started, right? तो what did you do? Did you do inter या फिर आपने A levels किया था? What did you go for? मैंने A levels किया था, O levels किया था. और Right. शुरू में इस तरह था कि मेरी फैमिली, स्पेसिफिकली माय ग्रैंडमदर, शी सेड नो, यू शुड गो फॉर मैट्रिक स्ट्रीम और आपको एफएससी करना चाहिए. बट आई वाज वेरी परसिस्टेंट कि नहीं, आई हैव टू ट्राई अ डिफरेंट सिस्टम जो पूरे मेरे घर में से फैमिली में से किसी ने नहीं किया था. सो आई वेंट फॉर O and A levels and did it. Sahi. So where did you do it from? Uh, I did it from Islamabad, Bahia College, Islamabad, Okay, so and you are a then Bahrian as well. yeah, So Sumaya over yeah, here. Yes, correct. I'm also a Bahrain. I've studied from Bahrain College, NY1 and Tarsals both. Nice to meet Uh, you, Samia. Yeah. okay, so you came from Islamabad to Karachi. Why? उधर भी Yeah. तो एक नस्ट है. What made you come here? Actually, I really wanted to do mechanical engineering. So mechanical engineering सिर्फ PNEC में ऑफर हो रही थी. Concerning how जो मैं grade score कर सकता था with a NUST test. So Makes sense. हम so सबकी यही PNEC was कहानी a good option for me. Yeah. है. Right. So आप इधर आए. आप जब वहां से आए थे आपको फर्क महसूस हुआ था वहाँ के स्टूडेंट्स में और यहाँ के स्टूडेंट्स में, खासकर जब आप ओए लेवल के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको और ज्यादा फील होता है? As such, first semester मुझे feel हुआ था certainly, क्योंकि जो भी subjects होते हैं first semester के वो they are very much interlinked to what FSC students study previously. Right. So it was a good change for me, or I got to learn a lot from my roommate Zishan, because he was a topper, kind of a topper in FSC. तो Right. उनका जो learning style होता है, हमारा जो learning pattern होता है, that's different. So it was quite challenging at first, but eventually I learned and all went well. So if we had to summarize your experience at PNEC in a line or in a word, what would that be? Amazing, I'd say. Amazing. Yeah, Right. a roller coaster ride, but amazing. How was the It was good. hostel So for we're you? still reaching that point of calling this experience amazing. अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें अमेजिंग इस एक्सपीरियंस को कैटेगराइज करने के लिए, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं हम. Eventually, It was hopefully amazing we will. due to different certain factors. First of all, it was due to NFST. I'd say largely due to NFST, because I spent Right. most of time with NFST during college. और उसके अलावा hostel was a good thing. Hostel is a thing जो हर किसी को experience करनी चाहिए, I'd say. If you're not ये तो है. experiencing hostel life, तो you're missing a larger chunk. So हॉस्टल का कोई आपका कोई ऐसा वाक्या है एनएफएसटी रिलेटेड और एनीथिंग लाइक दैट जो आप शेयर करना चाहें? फनी वाक्या. Funny यार, मैं इतना ज़्यादा funny नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन सोचना पड़ेगा कि कौन से वाक़यात शेयर किए जा सकते हैं on screen. So क्या हो सकता है? And so why did you choose I'd say NFST among all the society?
NFST चूज करने की एक रीजन लार्जली ये थी कि उसकी रिक्रूटमेंट सबसे पहले तो ओपन हुई थी एंड ऑल दैट, जैसे ही एंटर हुए थे तो रिक्रूटमेंट ओपन हो गई थी। और सेकेंडली मेरी क्लास के 2-3 स्टूडेंट्स वहाँ थे, जिसमें राव था, राव हमजा, जो बाद में जाके टीम लीड बने। उसके अलावा हमजा रियाज थे। और तो ये जो 2-3 स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास की, तो मैं उनको देखा करता था कि गैरेज में जा रहे हैं, बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि अच्छा यार गैरेज में काम करते हैं और ऑल दैट। और दूसरा जो रीजन था, प्राइमरी रीजन था कि मैं बहुत थक चुका था कि मैं घर, यूनिवर्सिटी से घर जाता था, हॉस्टल रूम जाता था, वहां जाके सो जाता था। मैं कहता था क्या शामें मेरी वेस्ट हो रही हैं, कुछ करने को नहीं है। सो आई वांटेड समथिंग टू चेंज। और एसेंशियली वो एक रीजन था कि मैं सोना कम चाहता था, बस मैं चाहता था कि टू बी प्रोडक्टिव। और उसके अलावा आई वांटेड टू वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन, आई वांटेड टू बिल्ड अ नेटवर्क। सो ये दो फैक्टर्स थे, दो मोटिवेशंस थी कि मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू समथिंग एंड आई हैव टू जॉइन अ टीम। So you said about Dishan bhai. He was in the team as well, Yeah. right? Yes, yes, Ishan. So Yes. being with someone who is in the same team as you, being in, like living with them and उनके साथ उठना सोना बैठना, so how did it impact your life and how did it groom you to be in the same team, be in the same room and practically spend your entire life with the same person? Not entire life with the same person, just 4 years that I spent with Yeah. him. So, um, it was an amazing experience. आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में साथ हैं, आप टीम में साथ काम कर रहे हैं, आप वापस घर जाते हैं और आपको एक सोर्स मिला है who you can talk about. और the good thing about Shan and me was कि हम लोग, अगर हमारे कोई प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे टीम के अंदर रहते हुए, because eventually he grew up within the team to be a technical lead and at the same time I was a marketing lead. So we have both had different opinions, different perspective. Okay, this is how we want to steer the team forward. लेकिन हम प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कभी पर्सनल स्पेस के अंदर लेकर नहीं आते थे. If there was something जो हमारे साथ टीम के अंदर होती थी within the team bounds, अगर हम वापस आते हैं एक रूम के अंदर, we are sharing a room, तो हम रूम के अंदर जाके we are both friends. Back again, everything comes back to normal. और वो जो केमिस्ट्री थी जिशान के साथ about okay, this is something that I should do, this is something that you should do, and this is best for the team. We used to decide it within the room. और रूम के अंदर लाके मतीन को बुलाया हमने और मतीन से बातचीत की एंड ऑल दैट. मतीन का इंटरव्यू करवाया और मतीन को बताया कि अच्छा ओके, यू हैव टू अप्लाई हियर. बाकी काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स थे जहां जिशान मुझे सपोर्ट करता था. आई यूज्ड टू टेक हिम टू मार्केटिंग मीटिंग्स, फंड रेजिंग की मीटिंग्स के अंदर लेके जाया करते थे. हम दो जाके बात करते थे एंड इट वाज अ वेरी गुड केमिस्ट्री, समथिंग दैट आई हैड विद जिशान. He knew okay when to speak up, when to give me a chance to speak during the meetings. तो हमारी जो chemistry और bonding थी within the team, वो I'd say it was the very best level. एक सवाल That's अभी आपने healthy. मतीन That's भाई a को healthy मेंशन किया, mindset. तो वो सोसाइटी कैसे मेंबर थे? लाइक आपने तो बिल्कुल पहला साल देखा था ना उनका. हाउ इज ही एज अ मार्केटिंग पर्सन? मतीन का मुझे अच्छी तरह याद है कि मतीन ने जब अपना इंटरव्यू दिया था तो वी वर रियली इम्प्रेस्ड. मतीन की सबसे अच्छी बात ये कि the way he articulates his thoughts या and presents them in a very structured manner. That was really inspiring for us. As we said, okay, this is the guy that we really want. राइट. Or then he just went through and through, or specifically speaking about, he was the top-notch candidate. I think so. So we really wanted him to be a part of the team. So that really stood out. And he is a very hard-working person. वो तो है. ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी. He's very dedicated, self-motivated. So he had all the positive ingredients जो हमें चाहिए थे to make a team. सही. Right. So, you know, आप जिस पोजीशन पे थे when you left the team, Mateen bhai is at the same position right now. So, you Yeah. know, things have evolved a lot. अब
the department, even जब हमने start किया था marketing, and now that we look at it, it has changed a lot. So, and you are quite in loop with what's happening in the team and what's happening in the marketing department specifically. So, Yeah. what's the one thing that, not one, actually more than one, what are the things that you think कि यार ये जो बदला है ये बहुत अच्छा बदला है, and I'm so proud of these kids? Actually, In terms of structure, it was all, mostly. yeah, yeah. In terms of structure as well as in terms of ideation, in terms of perspective, okay, how to lead marketing. Previously, before I joined, or while I was a team member, it was kind of different, honestly. It was all about chasing people around, calling them randomly, cold calls, and all that. So, from ground up, we had to initiate a good process. If you talk about Minehart, I'll state it as an example. Minehart is our sponsor, was our sponsor, I believe. So the idea was कि हम Minehart को on board लेकर आए, or we start tapping the international, uh, what do you call them? I don't remember the word. Sponsors? International sponsors, but ex-Pakistan, what do you call it? There's a specific word for that. Again, expats, expats, Pakistani expats. So, yeah, हम उनको tap करें, or we start telling them, okay, this is something to be doing for Pakistan, and this is a project that we need your help. तो वहाँ से वो जो perspective आया था कि okay, targeting certain communities to go out and reach out to and bring sponsors from, वो एक काफी अच्छी चीज थी. And utilizing LinkedIn specifically, वो सबसे अच्छा हमारा एक aspect था. और delivering quality over quantity in terms of the people that we reach out to. और उसके अलावा initiative taking, initiatives आप लो, उसके बाद उनको carry on करो and take them towards realization. जो Formula 1 in schools का concept था, that came up with Mateen. Then Mateen took the charge of it and then paved the way for its success. अच्छा, आपने जो अपने मास्टर्स का बताया था, मैनेजमेंट का बताया था, फिर डेटा का बताया था, तो इज इट लाइक अ टेक स्टफ है या इज इट लाइक बिजनेस स्टफ? I had courses from management, more of a business stuff, as well as because base specialization जो है वो quantitative business के अंदर है, so I get to learn machine learning के subjects है मेरे पास, data के subjects हैं, data analysis के हैं, consumer preference है, so it aligns more along the lines of data science, data analysis, or business intelligence. Did working at NFST as a marketing member have any influence on the career you're pursuing right now? Absolutely, 100%. The reason I am here, I'm pursuing this degree, is due to my past experience with NFST. Hadn't it been the case, तुम पता नहीं अभी I think technical को degree कर रहा होता or something, लेकिन the exposure that I got from NFST was of paramount importance. With regards to the decisions जो अभी मैं लेता हूँ. What's the worst place you've been for NFST? जैसे मैं अभी तक शुक्र है कहीं worst place नहीं गया, ज़्यादा सारा बाइक पे ज़्यादा मार्केट गया हूँ करनी है. That's the maximum I have अभी तक experience. Yeah. आप यार first place क्या हो सकता है? वैसे marketing meetings अच्छी होती थी ज़्यादातर, तो there is no such worst place जहाँ पे मैं गया हूँ, अच्छी जगह पे हुआ करती थी. एक थी हैदरी के पास. अच्छा, टीम में कोई ऐसा टाइम जिसमें which was very difficult for you, मतलब ups and downs आते हैं, so what was the most difficult time for you? The difficult time was within COVID because we had good plans, we were putting them into execution, and then COVID struck, so that disrupted a lot of our plans of moving forward. Right, so आप जब टीम में आए थे तो उससे पहले टीम डिफरेंट थी, फिर ग्रेजुअली आपने टीम को प्रोग्रेस करते हुए देखा होगा. Where do you see कि टीम अगले 5 साल में, where do you see the team in the next 5 years? In the next 5 years, definitely pursuing in terms of the initiatives that I particularly know, I do really see the hope that we will build
Formula One in schools. It will be a national program, Yep, inshallah, that will be something that we'll be working on. inshallah. Also, something about the competition, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो competition ही है, बाकी तो are extra initiatives. So talking about competition during your 4 years, 3 years at NFST actually, uh, 3.5 years. we'll take it three. Okay, 3.5. Okay. Okay. So, did you go to any international competition, or did the team go in the international competition? If yes, then was it FSUK? Was it FSG? Which one was it? It was FSUK, 2019, or it was a good competition, I'd say, from my understanding, because we were within the top 10 teams in business plan. We ranked as one of the top 10 teams within business plan, essentially, and I was a part of the business plan team. So, and if you ask me, then it was a very pivotal moment for me, because that really gave me a boost of confidence of how to steer the team, how to network, how to speak up. So it had such a great impact on me that it turned me, or it just uh, it helped me explore my ideas and implement them in a very organized manner. How was your camping experience? Okay. So Yeah. camping experience इतना अच्छा Mhm. नहीं था, लेकिन it was a good experience तो altogether. इस साल यूसुफ भी गए उस टीम Essentially, because दूसरी टीमों के जैसे टेंट था हमारे uh, टेंट थे तो और जैसे हम रह रहे थे उधर मुश्किल था ऑल द yeah, कैंपिंग अपना पूरे मजे हैं बट स्टिल वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट साइड ऑब्वियसली yeah. Yeah. आगे बस बारिश हो जाए तो बस पे सब सब कुछ कुछ मसी मसी बहुत हो जाता है, Uh, बिटल बड़ी पार्ट के सो इफ अंदर. what were the positions that you अच्छा guys got? गो अहेड uh, Positions that we got, I just specifically remember business plan की position अभी, that was the 10th, uh, yeah, 10th in business plan, I Okay, so guess. the year you guys went, the color was red, right? Yes, I suppose. That Yeah. was a trick question for you. Okay, so why was it? Why did you guys make it red though? Like जो भी color था, was it because of the sponsor? Did you guys just like the color red? Yeah, I think it was yellow, I believe. Yeah, it was yellow, not red. Red was for FSG, and yellow was for I think we decided internally our sponsor wanted it to be red. Oryx was our sponsor. It had red in its color, but they had a palette. So within that palette, we chose yellow. So I, yeah. तो अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस देना हो जब ये यूनिवर्सिटी में है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि और मेहनत करो अभी जो कर रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो व्हाट वुड यू से टू दैट पर्सन स्टैंडिंग देयर हाँ, अपने आप को NFST के लिए रिजर्व कर दो बस, because NFST वैसे will जस्ट help you grow. क्यूरियस आपकी जीपीए क्या थी जीपीए क्या थी मेरी GPA CGPA थी 3.58 the time I graduated. मतलब ये प्रीटी स्मार्ट नहीं यार, इतने भी स्मार्ट नहीं हो वैसे तो. अच्छा, so you said Oryx was like the diamond sponsor, title sponsor at that time. Yeah. So and फिर आपने कहा कि Minhart was the sponsor that you guys like worked upon and उसको लाए on board. So just tell me about Minhart. क्या हुआ? What was the thought process behind bringing them on board? फिर उनको like everything के बाद में बहुत सारे मसले भी होते हैं. That's something that we face every day as well. So how did that go about, given that they were internationally, uh, like the CEO of the company wasn't Pakistani local, so sari meetings online thi. How did you guys manage all of that? So essentially, I reached out to him through LinkedIn, and we got in contact. I pitched him. He was interested in having a meeting with us. Then I, along with Muhammad Zan, was also a team member, and as well as there was a personnel from NUST that joined the meeting, because we wanted to give
wanted to have it what do you call be we wanted it to be impactful. So we engaged with a person from NUST so that he can join the meeting and can assist us, and he can put together NUST perspective. Okay, this is something that NUST is doing, and we are a part of NUST, so that we don't run into any legitimacy problems. Because with students, usually the case is that students pitch up, and then if the person is of high profile, then he runs into a stance. Okay, this is just a student's perspective. So just to give him an image, okay, this is supported by NUST, and NUST itself is an organization that's very much acclaimed within Pakistan. So we had this professional, and then I started pitching up. Then Zan joined. Zan also gave him a good overview. Okay, this is the team, what the team does. We talked about future plans. Okay, this is something that we are doing. We're heading towards electric. We heard his experience, his motivation, and we did good amount of homework on Shazad Naseem. So we had a very fruitful conversation, and then we just carried along. We had all of this conversation. We continued over emails, and then I think Mateen took charge of it, and he did it. He did execute it in a very pretty well manner. Right. That is something amazing, and still up until this point, Matimba is the one person who we will always look up to, and we still do. Honestly, he's got the brains that nobody can ever have. Like matlab, I sometimes think the 3 years that we got with him, 2 years actually, Yeah, will never be enough. We will always look up to him, and we'll always be. I can just see myself calling him when he graduates. Ke, अब क्या करें? What's the next thing? Right? yeah, yeah, Not yeah. because we don't know, but because we will always believe that he'll be someone who can give a better opinion on something. So yeah. Definitely. And this is something that you have to build yourself. Even you have to look up to your seniors, look up to Mateen, okay, what he does, and then build the same capability as of him, bringing in creativity. You have to be creative at the same time. You don't have to be a follower, but Exactly. you have to overachieve what Mateen has achieved. Yes, exactly. We always try to be better, always striving to be better, but Yeah, somewhere he's always the yeah. best. Okay, so uh, the thing is that sometimes जो चीज़ें हम NFST में कर रहे होते हैं वो चीज़ें हम क्लास में नहीं कर रहे होते, बल्कि हमेशा ऐसे ही होता है. तो Yeah, कभी कभार ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि यार पढ़ाई करें या NFST करें. एट दिस ईयर एट दिस स्टेज कल क्या हम अब सेकेंड ईयर में अब ये नहीं होता, अब पता है कि NFST करना है, पढ़ाई नहीं करनी, मतलब हो ही जाती है वो. बट व्हेन यू स्टार्ट ऑफ you're like कि यार पढ़ें या ये करें. How did you convince yourself at that point, given that you started in the second year? तो how did you convince yourself कि यार NFST is what it is and this is what will make me what I want to be? एनएफएसटी की सबसे अच्छी बात है कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. अगर आप थोड़ी सी भी कन्विक्शन दिखाओ, सो इट्स जस्ट अ जाइंट वेब जो आपको अपनी तरफ खींच ही लेता है बस. एंड देन इट्स जस्ट अबाउट मैन्यूवरिंग. ओके, मुझे पढ़ाई करनी है, ग्रेड्स लेकर आने हैं, एंड आई थिंक then it becomes secondary after grades and your pahai and everything else. Something that becomes of paramount importance is NFST. Somehow, I don't know what it is. Like, this is the case that I felt. Yeah, So exactly. it was just about dealing with uh, okay, पढ़ाई करनी है, आखिरी दिन बैठ के कर ली, आखिरी वीक में कर ली and all that. लेकिन प्रायोरिटी जो है फिर वो आपकी NFST बन गई थी. Yeah. Okay. Okay. So आपने टीम में 3 years गुजारे, आपने बताया 3.5. So उसमें आपकी सबसे ज्यादा मेमोरीज टीम में किसके साथ बनी? मेमोरीज के साथ बनी. On top of mind, it's always Zishan. Because Zishan के साथ Oh, सबसे ज्यादा मेरा okay. टाइम गुजारा. उसके अलावा सीनियर्स जो थे, हसन भाई, जैनब भाई, उस्मान भाई से अच्छी बातचीत थी मेरी. राव के साथ अच्छा ताल्लुक रहा. अभी भी है राव के साथ. तो राव स्टिल मेरे अपार्टमेंट मेट है राव. और उसके अलावा जरार,
उसाद, there are a lot many people इनके साथ अच्छी बातचीत, इमरान। और एक दफ़ा स्पेसिफिकली मुझे एक मोमेंट याद है कि हम लोग सबमिशन कर रहे थे 2021 2021, हाँ यस आई गेस 2021। तो सब चीज़ें कंपाइल की हमने। सो वी फाउंड आउट कि जो प्रेजेंटेशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, टू मार्क नहीं है, और वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, और बाकी सबके पेपर एग्जाम्स चल रहे थे। तो राव के घर हम लोग गए, और फॉर अबाउट 3 days हमने बाहर आसमान नहीं देखा था। और हम लोग से एक कमरे के अंदर रहे 3 दिनों के लिए, एंड वी रीडिड एवरी अदर प्रेजेंटेशन। हमने दोबारा सब कुछ की और उसके बाद सबमिट करवाया। सो 3 दिन के बाद हम लोग ने बाहर निकले, फिर हमने जाके आसमान देखा, हमने कहा "ओह, आसमान भी बाहर होता है"। तो आपका जो ये जो टाइम था पूरा टीम में, तो इसमें टीम का एनवायरनमेंट कैसा था? जैसे वी हैव हर्ड कि जैसे अनुषा बाजी के टाइम में थोड़ा स्ट्रिक्ट था, अभी बहुत हमारा जो है चिल टीम है, तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। लेकिन आपका टाइम जो था उसमें टीम कैसी थी? मतलब टीम में एनवायरनमेंट कैसा था, इंटरेक्शन कैसा था सीनियर्स और जूनियर्स के साथ और बाकी मेंबर्स के साथ? सीनियर जूनियर्स का इंटरेक्शन अच्छा था। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, इट वाज वेरी फ्लूइड। लेकिन हमेशा से जब सीनियर पोजीशन पे होते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है कि चैलेंजिंग होता है टू मैनेज पीपल। और सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है कि हाउ टू मैनेज इफेक्टिवली मैनेज पीपल अराउंड। तो राइट। या वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो अच्छी कर ले, he can win the team, he can be the best in his game. सो अच्छा, आप लोग उस वक्त काम कैसे करते थे? लाइक यू गाइस वर्क इन गैराज। हम तो बिल्कुल, हमारा जो ऑफिस है वो तो अभी हमने रहना ऑफिस है, हम कभी ऑफिस पे काम कर रहे थे, कभी लाइब्रेरी में कर रहे थे। सो व्हेन यू वर इन द टीम, तो तब कहाँ कैसे आपका काम होता था? So essentially हमारे यहाँ काम यूजुअली ऑफिस के अंदर ही होता था, तो लेकिन ऑफिस ऑफिस के अंदर वाज द सेम क्योंकि जो अभी है? इट वाज द सेम? नो नो नो, जहाँ सीएनसी मशीन्स हैं अभी, वो ऑफिस था हमारा पहले। सो वो सही था ऑफिस, ऐसा हमारा इंटरेक्शन ज्यादातर गैराज में नहीं होता था इतना ज्यादा। गैराज आना जाना, गैराज में काम नहीं करना होता था, ये होता था कि आप गैराज में गए हुए हैं, जस्ट असिस्टिंग पीपल अराउंड। और यूजुअली क्लीनिंग ड्राइव पे जाया करते थे कि गैरेज क्लीनिंग ड्राइव हो रही है तो आपको जाना है। बट सो सीएनसी या मशीन वाली जगहों पे मच्छर उसके बहुत अलावा होते तो थे। मच्छर होते थे, गर्मी होती थी, कबूतर होते थे। सो सब कुछ हुआ करता था। कबूतर तो खैर I have a अपनी है। question about आपकी जो राव भाई के साथ जो इक्वेशन है, जैसे जब आप टीम में साथ कर रहे होते हैं वो तो अलग है, आपका एक्सपीरियंस होता है। जब आप किसी के साथ हम्म। एक रूममेट के तौर पे होते हैं तो एक्चुअली गेट टू नो द पर्सन इन एंड आउट, और बहुत खड्डे भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो आपकी उनके साथ हाउ डिड योर इक्वेशन विद हिम डेवलप ओवर द टाइम फ्रॉम वर्किंग इन अ टीम टू बीइंग अ रूममेट? Certainly we knew each other previously, और हमें पता था कि okay, क्या वर्किंग स्टाइल्स हैं, किस तरह रहते हैं। राहुल के घर जाके हम काम शाम करते थे, खाने पीने एक साथ जाया करते थे। सो वी न्यू ईच अदर, यहाँ आने से, जर्मनी आने से पहले भी सब कुछ। तो इट डेफिनेटली डेवलप, यू गेट टू नो ईच अदर पर्सनली, आपको एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन इवेंचुअली इट वाज, पिछले पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डेवलप हो रही है। अच्छा, सो अभी हमें जो स्पॉन्सर्स लेकर आने होते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती है, फिर आप स्पॉन्सर्स को रीच आउट करो, बहुत सारे तो आगे से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। सो व्हेन यू वर इन द टीम, तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? तो स्पॉन्सर्स को लेकर आना एंड देन उनके साथ जो मीटिंग्स होती हैं उनको, और हमें स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं बट इतने मिल नहीं रहे होते। सो हाउ डिड यू टैकल दिस? Tapping where the potential is. You identify who the people are that have the resource, that have the right mindset, and then tapping them. First of all, organizing and structuring is really important. You can adjust, and doing your homework for each other person is really important. You should know who he meets, what his network is, or what his current portfolio is,
उनके पहले इनिशिएटिव्स क्या रह चुके हैं. So you should know in and out. If not in and out, you should know about the person that you who you are calling, ताकि आप उनसे एक conversation build कर सकें. ये बहुत important है. It it is not just about strike of luck. It's about doing homework, doing research, and then organizing your contacts, and then reaching them out, making sure you're giving them space, their own space, and then also convincing them, okay, this is the project that we're working on and all that. So before uh, I was in the team, it was not like the same way. It was just about randomly calling people. So उसकी जो probability थी, that was very less, 1 in 1,000, I'd say. 1 in a, I don't know, 1 in 500, 1 in 500, because दिन की तकरीबन जब मैंने शुरू किया था तो I used to call around 30-40 people around दिन में. So जब हमने स्ट्रक्चर put in place किया, so it was just came down to 10 or 15 people, और वो भी quality contacts जिनसे आप properly बात कर सको. तो ये बहुत important था. Moreover, लोगों से वही मांगो जो वो ऑफर कर सकते हैं. Let's say हमारे एक sponsors थे, travel agency, जिन्होंने हमें sponsor किया था for 2019. So we went to him not from and we didn't ask him for any other monetary support. We told him, okay, हमें tickets चाहिए. अगर आप टिकट्स दे दें बहुत अच्छा होगा. अगर आप हमारी वीजा में हेल्प कर दें बहुत बेहतर होगा. सो बिकॉज दिस समथिंग जो हमें वो ऑफर कर सकते थे. सो हमने उनको जाके पिच नहीं किया कि हमें टाइटल स्पॉन्सर अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा है. सो नोइंग द कैपेबिलिटी कि वो लोग आपको कितना स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनकी विलिंगनेस टू पे से कि विलिंगनेस टू स्पॉन्सर क्या है, उसके बारे में आपको अच्छा अंदाजा होना चाहिए. राइट. सो वी गेट इट के चलें स्पॉन्सर्स आ गए, हमने बहुत मेहनत की, वी वर्क रियली हार्ड टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड, वी आर रिच नाउ, वाओ, वी हैव मनी, वी आर गोइंग टू द कंपटीशन. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज़ हाउ मच सस्टेनेबल द टीम इज़. आज टीम है, पिछले 12 सालों से थी, लेकिन क्या वो टीम अगले साल होगी? सो वी हैव टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी टू मेक श्योर कि अगले साल भी, उसके अगले साल और अगले आने वाले हर साल में टीम होगी. सो वी आर डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी दिस ईयर. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर इट? Essentially, if you see the strategy about Formula student community, we talk about Formula, this scientific society in Pakistan. These initiatives were laid out ताकि we can make sure the team exists in a very sustainable manner. So ताकि आप लोग ये subsidiaries अपनी चलाना शुरू करो, you provide value, and then you bring and translate that value for the team. So that was our motive, to build a Formula student community, to delve into scientific society, taking further STEM initiatives. इस पे largely society का benefit है, but eventually it all boils down to NFST. कि NFST को क्या इसमें support मिल रही है और NFST किस तरह आगे चल रही है. Right, that's something that we're also looking into. अच्छा, एक चीज़ होती है जो कि बहुत लोग पूछते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है. वी मेक श्योर कि हम उनको बताएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका फिर भी ये सवाल होता है कि यार गाड़ी क्यों बना रहे हो, क्या क्या मिलेगा गाड़ी बना के? कंपटीशन में जाओगे, गाड़ी चलाओगे, वापस आ जाओगे, फर्स्ट पोजीशन ले लोगे, चलो एट सम एक्सटेंट तो सोसाइटी को भी बेनिफिट कर लोगे, लेकिन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पैसा बन रहा है या नहीं. सो व्हाट इज़ योर POV ऑन दैट कि क्या हर चीज़ कमर्शलाइज की जा सकती है, क्या करनी चाहिए, या कुछ चीज़ों को वी शुड लेट इट बी द वे इट इज़ एंड जस्ट excel in that, or should we just bring in the commercialization wala factor? देखें, if you talk about commercialization, it's definitely a very due factor जो हर किसी को consider करना चाहिए. We are doing it as a test project right now, but it is developing students ताकि वो आगे जाके ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकें, ऐसी मार्केट को टैप कर सकें जिसके अंदर वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें. They can be innovative, they can be creative enough
ताकि they can attract a larger market. We just doing the simulation with this vehicle here currently. Like, as soon as you graduate, as you enter the workforce market, we are enabling entrepreneurs, I'd say, at this stage through NFST. We're giving students a chance to experiment their ideas, to put theory into practice, and take it to the market and see what works and what does not work. ये सारी capacity building हो रही है students की through this model. आगे जाके they can work for health tech, they can work for AI, they can work for generative AI, they can work in manufacturing, robotics, anything that they wish for. But जब उनकी roots सही align होंगी, they know the value of business as well as technology, and then they can work towards the cross section of business and technology. They can do wonders going forward. Possibly in the next 10-15 years, if we just keep doing this, there could be a next unicorn from the students जो अभी काम कर रहे हैं. So we're providing an environment for students to grow. Exactly, and I believe कि to a very certain extent आपके पास कुछ ऐसे भी coaches हैं that align with business, that very much align with business, and you are very much aligned with the startup culture and the hustle culture, and that's something that you've been through already in NFST. Yeah. I think this hustle that we do over here, सुबह से आना, कभी कभार क्लासें भी छोड़ देना, इधर आना एंड रात तक रहना 7-8 बजे तक. Some people even stay till 2 in the night. So how does that culture align with the culture of startup? I mean, it very much does, but somewhat, if you could go more into detail on that. If you talk about startup culture, it's very different, I'd say. You just start from a basic initial idea and then develop further on it. It is similar to what we do in NFST, कि हम लोग छोटे से idea को pick करते हैं and then we take it further along, see it to execution. And that is like the exact same thing that is replicated within startups. Startups के अंदर कैसे लोग चाहिए? Highly motivated लोग चाहिए, self-motivated लोग चाहिए. And within NFST, if you see around, there are people you see, okay, these are really self-motivated. They align with the vision. They know how to carry a vision forward. This is the exact same thing जो एक startup को चाहिए. So startup founding and working in a startup, it's all about mindset. If you have the right mindset of being a founder, of taking initiative forward, of creating a larger advantage for the society, this all sums up to be a startup. Exactly, where we're building on an idea, especially with the F1 and schools wali cheez, we're realizing Correct. that this was just a thought that crossed Yeah. the mind. It was just a post that a team member saw, and then they brought into the team, and then everybody got in. And now that we look into it, it's not just the marketing team; it's the technical team working along with Yeah. the marketing team, and Yeah. we're creating bonds within the team, where we're coming on a single spot, that is F1 in schools, and एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम सब equally invested हैं. ठीक है, we might Yeah. not get that much aligned working on the car क्योंकि marketing is just very different from the technical side, but over here we're pretty much aligned. So I guess that's pretty much also helping us grow for that culture. We're not programmed to be क्या कह Yeah. सकते हैं ऐसे corporate slaves. We're programmed to be doing something that's big and that's great and that's changing the world. So yeah, that's really awesome, and And that's that can something. add value as well as create lasting impact. Yeah, Adding value and creating an impact, these are the fundamental approaches जो एक startup कर रहा होता है. Or if you see yourself, you're also doing the same thing. yes, and that too at a very initial stages of our life. Yeah. Correct. And I think that's the best thing about PNEC. यहाँ पे कुछ करने को नहीं है, and जो तो we have all the energy to put into this thing, and the awesome thing about this is कि इतने सारे लोग 50 लोग एक ही मकसद के पीछे जा रहे हैं, and they're also motivated that you also want to do something great and you also want to change Yeah. everything.
एंड दैट्स समथिंग जो आपको किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी. या Definitely. Yeah. So yeah, I think it was awesome talking to you. It was amazing. We've Likewise. officially Likewise. hit the 40 minutes mark that was for this podcast. So just as a signing off question, what's the advice that you'd like to give to us as marketing team members? Yeah. Keep your spirits high. Moreover, have a vision for yourself and learn. First of all, learn and then contribute. Because if you don't contribute enough, you're leaving a void behind. So you have to make sure this journey keeps on moving forward and you bring substantial value to the team. Definitely. Because team आपको बहुत कुछ सिखा रही है अभी currently. You have to make sure कि आप टीम के पास भी कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स छोड़ के जाएं जिनके ऊपर टीम कल्टीवेट कर सके, जिससे टीम आगे बढ़ सके. Making the team sustainable, keeping the legacy Yeah, definitely. going on. Yes. So okay, so thank you so much for joining us today. Sumaya, do you have any other questions that you might like to ask? Yes, that's enough. No. Okay, so that way Okay. that was Thank you very it much. from Likewise, our it was a pleasure yeah. I talking to you hope you're all. doing good with the really cold weather over there. The winters are coming for you. Yeah. Yeah. Yes. So yeah. So take care and Allah Hafiz. Inshallah, Take we'll care. keep Talk to in you soon. Yeah, please. contact in the future as well. Sure, sure. Thank you for Okay, keeping take care. up with us as well. Definitely. My pleasure. Thank Okay. you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.